Okay. Am I audible to you? Yes, sir. Fine. Last year complete किया था आपने? Okay. Lynn, paper is meant to be checked afterwards. So better you put your papers inside. तो पेपर में जितने मार्क्स है उसका तो इम्पोर्टेंस पता नहीं, पर तुम्हें मैं घर पे फोन करके बताओ तुमने क्या क्या तीर मार रहे हो यहाँ पे. लास्ट क्या कंप्लीट किया डन पूरा starting with start with transportation start करना भाई Okay. Let's start with the next part, I guess. यहाँ से start करना है. Okay. So I wanted to close all your volumes, everything. The first part is very easy. So that's basic part. Okay. वो इतना टफ नहीं है. उसके आगे का पार्ट करो जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. Now, so let's go. Okay. Now, the next study we are going to study is transportation. So my first question to you is, why do we require transportation? Do an organism require transportation? Transportation of food and water. Transportation of blood through our body. Nutrient through part of our body. To remove deoxygenated blood from our body. और कुछ एक ही बोला पर एक बस मेन तो बाकी बच्चा है. एटीपी ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का क्या रिलेशन? गुड. एटीपी ट्रांसपोर्टेशन और कुछ सर आपने सब कुछ इनकमिंग बोला है, आउटगोइंग कुछ नहीं बोला आपने. गुड. Throwing out अब वो प्रोसेस हुआ. So but why do we require transportation in general for organisms is it needs to transport various substances across or within the body. Okay, so like it need to transport respiratory gases, nutrients, enzymes, hormones, energy and many other products. It never transports blood. Blood is a medium and not transport. Okay, so that is why transportation is required. So again like हमने पहले दो खत्म किए न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन. हमने दोनों में पढ़ा था प्लांट as well as animal. So here also it is both plant as well as animal. So first
वहां पे हम जब प्लांट पहले पढ़ा था फिर एनिमल पढ़ा था, अब थोड़ा उल्टा है, पहले एनिमल पढ़ेंगे और फिर प्लांट में आएंगे। सो प्लांट बाद में एनिमल्स, व्हेन आई से एनिमल्स वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू ह्यूमंस। सो व्हेन आई से ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, यू कैन सी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपन नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system is divided into two main types: open circulatory system and closed circulatory system. So what is open and what is closed? अरे 10th में आए हो भूले भटके से, 10th में आए हो कि नहीं आए हो? मुझे तो डाउट ही लग रहा है तुम्हारा शक्ल देख के। तो इतने सालों में इतना तो आंसर मुझे मिला है क्या ओपन और क्लोज क्या होता है। आई थिंक पहला बैच होगा। यूटी के हेडलाइन पे नाम लिखना पड़ेगा, यूटी का मैगजीन होता तो। When the transporting fluid flows into open cavities, open body spaces, is known as open system. When the fluid flows in closed pipes, we say it as closed circulatory system. Simple language to understand is, घर पे पानी आता है, पाइपलाइन से आता है, so is that pipe closed or open? So इसको closed system बोलेंगे, okay? But बारिश होती है, माउंटेन से पानी इधर उधर उधर से किधर तो जाके एक रिवर में इमिट होता है, वो सब ओपन है ना, कहीं से भी कहां से भी आ रहा है, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। Is it coming through pipes? No, na? When the circulating fluid, I have not used the word blood, मैं कहीं कभी blood use नहीं कर रहा हूँ। So when the circulating fluid or the transporting fluid flows in open spaces, open body cavities, it is known as open system. And when it flows into closed cavities or closed, not cavities, closed pipes, then we say it as closed circulatory system. Am I clear? Now, when I say the circulating fluid, so can you give me an example of circulating fluid? Blood. उसके अलावा lymph. उसके अलावा circulating fluid है वो, सेल है वो। तो मेनली 4 सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं। okay? आपने जो मुझे दो कहे, वो सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हैं इवोल्यूशन। The first and the foremost circulating fluid is good water. सबसे पहले पानी बना, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, इन सब में पानी मूव होता है। ये 9th स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, पॉरीफेरा, कोलेंटेटा, इनमें पानी मूव होता है। तो शायद पढ़ा था डेटा। ओके, सो दैट वाटर मूव्स। सो पहला सर्कुलेटिंग फ्लूइड, this water slowly evolved in a better form to form known as hemolymph, plasma hemolymph। ये एनालिडा के इनमें कहा जाता है, इंसेक्ट्स वगैरह में हीमोलिम्फ कहा जाता है। फिर इनसे थोड़ा बेटर हुआ
Okay, open and close. Now, so water, hemolymph, then comes hemolymph के आगे बढ़ा blood. Blood से derive हुआ lymph. Okay, so now children, when I say closed circulatory system, when the circulating fluid flows into closed pipes, so that is known as blood circulatory system. By default, जब भी हम पढ़ते हैं lower classes से लेके अब तक, we say circulatory system. So what are we referring to? Blood circulatory system. अब दूसरा open circulatory system. Example is lymphatic system. ये पढ़ोगे. So now example of blood circulatory system. All higher groups. Okay. Annelida onwards सब में close होता है most probably. पर specifically अगर देना होगा तो the vertebrates, apes, amphibians, reptiles, mammals इन सब में close होता है. Human being is example of blood circulatory system. Example of open system is insects. Insect में open system होता है. Okay? पर उनमें lymphatic नहीं बोलते, उनको hemolymph कहते हैं. Example of lymphatic humans. तो हमारे में दोनों present है. Lymphatic open type भी और closed type. So when we study this both together, then blood एक बार समझ में आता है. समझ में नहीं आता है वो है lymphatic system. Because there is no proper diagram associated with it. So we need to understand, imagine करना होगा. इसमें सब कुछ diagrammatic form है. So there is no problem as such. Am I clear? Yes, okay. So shall we start? Yes. Natlan, अपन पहला right वाला पढ़ रहे. सिर्फ blood circulatory system. So what is blood circulatory system made up of? Blood vessels, heart. Good. They are made up of three components: blood, blood vessels, and heart. Blood circulating fluid, closed system है तो pipes होंगे, so that is blood vessels, and because it is closed system, it has to pump ताकि सब जगह पहुंचे, and that is why a pumping organ known as heart. So we will be studying under three areas: blood, blood vessels and heart. सबसे पहला blood के बारे में पढ़ेंगे. Anybody? How to define blood? 9th standard tissue chapter. Syllabus में था. It is a connecting tissue. Yes. Connecting tissue. Fluid connecting. It is a specialized fluid connective tissue. We never say anything apart from this. It is a specialized fluid connective tissue made up of RBCs, WBCs, platelet and plasma. Good. So can I say made up of plasma and cells? Yes. Okay. So it is made up of plasma and cell. So if I take a test, अभी वो क्या शेयर होगा? नहीं, उनको क्या दिखाई देगा? बोर्ड या ये? मॉनिटर को घुमा सकते हैं ना? मॉनिटर को छोड़ो यार, उसके बाद स्टॉप से फिर शेयर स्क्रीन, फिर एडवांस सेकंड कैमरा शेयर. आई थिंक बोर्ड दिखाई दे रहा है. ये उन लोगों को दिखना चाहिए ना. ये वो बह रहे हो. नील दिखाई दे रहा है बोर्ड? हाँ सर. Okay, so if I take a test tube and I fill it with blood, okay, so blood
अगर मैं सेंट्रीफ्यूज करूं तो they form a two layers. The upper layer forms the liquid part and the lower layer forms the solid part. So the upper layer is known as plasma and the lower layer is known as the cells. Cells में तीन part आ जाएंगे. Okay? RBCs, WBCs and platelets. Okay? In fact, पहला platelet होगा फिर WBC होगा. अब the question is, what is the function of plasma? Acts as a liquid medium. Acts as a liquid medium. और कुछ बोर्ड पे से पढ़ाना है तो PowerPoint पे डालना है. So before that, functions of blood. पहला function transport of nutrients. Already अपन ने बोला auxiliary products, respiratory gases, metabolic intermediates, hormones. Body temperature regulation. Blood also maintains your body temperature. Okay, so it will try to escape the heat out or either to conserve the heat. Maintenance of pH. What is pH? बाजू में क्या है पता है? इसके बाजू में डूब मत. हमारा सुना है? डूब मत चिल्लू पर पानी में डूब मत. pH का क्या मतलब होता है? कितना स्ट्रॉन्ग है. पूरा चैप्टर हुआ न्यूट्रिशन के ऊपर, एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गधों को एसिडिक और आइडियम पता होता है. pH is nothing but neutral scale के ऊपर, स्केल के ऊपर, pH के स्केल के ऊपर 1 to 7 is acidic, 7 is neutral and above 7 is alkaline or basic. Protection from disease and lastly clotting of blood. So these are some of the functions of blood circulatory system. Next comes this, what is blood made up of? जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. It is made up of plasma, then buffy part that is nothing but white blood cells, then comes the platelets and then comes the RBCs. अब सबसे पहले plasma. The plasma constitutes about almost 55% of the blood and it is further made up of 90% के आसपास water, 91 अपने को exact figure नहीं है, 90 to 92% is water. The remaining 8% to 10%, अगर 90% बोला तो 10, अगर 92 पड़ा तो 8%. So 90 to 10% के आसपास जो बचता है, that are substances dissolved in it. ये plasma is liquid compound, उसके अंदर जो dissolve हुआ वो. अब उस 10% के अंदर जो dissolve हुआ, उसमें से almost more than 7% is proteins. मतलब maximum concentration proteins का है. And then other substances like carbohydrates, lipids, enzymes, hormone, वो सब मिला के बाकी सब कुछ आ जाता है. Okay, so now we need to understand children is वो प्रोटीन सबसे ज्यादा क्यों है? Anybody? सिलेबस में नहीं, इसको नॉलेज है. Why is protein more? It's a building block of the body. Okay, not exactly, but muscle tear is the building blocks of the body. More energy, proteins energy कभी नहीं आती. Respiration chapter में एक पढ़ा था. Then ये 7% proteins है. अगर मैं उसको further differentiate करूँ, again not required, but again differentiate करूँ, but it is made up of something like albumin, fibrinogen, immunoglobulins, some of the proteins. Albumin, अंडा खाते हो? White part,
is albumin. कच्चा पार्ट is albumin. बॉयल किया तो मेन बन जाता है, बॉयल नहीं किया तो मीन बन जाता है. सिर्फ आई और ई का फर्क है. पर वो व्हाइट नॉट गुड, द रॉ इज गुड. अपन व्हाइट भी प्रोटीन का ही पार्ट समझ के खाते हैं. अब इट इज वन एल्बुमिन सबसे ज्यादा होता है. उसके बाद फिब्रिनोजन वो पढ़ेंगे, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो क्लॉटिंग गिरे ब्राउन पार्ट निकलता है. देयर इज अ लेयर फॉर्म ऑफ ब्राउन कलर, इसे हम बड़े प्यार से खुजा खुजा के खींच के जानबूझ के ब्लड निकाल के टीचर को दिखा, मैम ब्लड ब्लड, कैन आई गो टू द नर्स रूम. फिर पूरा स्कूल घूम के फिर लेक्चर में एंटर मारने का जो हक होता है उसको क्लॉटिंग बोलते हैं. बराबर ना? सबने किया है. अरे ऐसे ही करते हो. सर मैंने नहीं किया. वो तो बेकार है. क्या बकेट लिस्ट में करना है? ठीक है क्या? अगर नहीं लगा तो हम लोग लगा देते हैं. मतलब दैट्स द फिब्रिनोजन. तीसरा इम्यूनोग्लोबुलिन. अब जो एल्बुमिन था, जो पहला पंटोन होगा, ये मेंटेन करता है आपकी ब्लड की विस्कोसिटी को. कितना गाढ़ा या कितना पतला, ये एल्बुमिन डिसाइड करता है. इसके लिए ज्यादा है. अगर कम हुआ तो फ्री फ्लोइंग ब्लड होगा. फ्री फ्लोइंग, आई अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय. प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा. ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हार्ट पे इशू आएगा, हार्ट अटैक आएगा और ऊपर जाओगे ज्यादा. नीचे जाएगा. क्या होता है? रिकवर. हाँ गुड ना, रिकवर हो सकता है. तो मौत कभी को बोल के आती नहीं ना. यू नेवर नो कब होगा तेरा टिकट कंफर्म. दूसरा, अगर गाढ़ा हुआ तभी भी उल्टा ही होने वाला है, पर होगा वही. क्लॉटिंग हुआ तो ब्लड वेसल में क्लॉट होगा, ब्लड वेसल में क्लॉट हुआ फिर हार्ट अटैक आएगा और फिर भी ऊपर ही जाओगे. इसमें ज्यादा है, पहले में कम है, पर जाओगे जरूर. सो दैट्स इन टर्म्स ऑफ थिकनेस. फिब्रिनोजन इन टर्म्स ऑफ क्लॉटिंग. इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ही छोटी सी चीज होती है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो तुम्हारे अंदर और बाहर जाने की कोशिश में रहती है. आज की डेट में बहुत सुना होगा कि कोविड-19, कोविड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन से बनते हैं. तो अगर ये नहीं है तो एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है तो इम्यूनिटी नहीं है, और वो नहीं है तो पता होगा कहाँ पे होगा. Okay, so that's again a part of proteins. So proteins are very important. Then comes the next part is the cellular component. Cellular component क्या है? Good. Then exam में you will never use the word RBCs, WBCs and platelets. You will write erythrocytes, leukocytes, thrombocytes. Technical terms. आएगा आगे. So RBCs, erythrocytes. WBCs, leukocytes, and platelets, thrombocytes. So अपन एक एक करके समझ लेंगे. आपको. So RBCs क्या कलर होता है? Red in color. Why they are red in color? They are red in color because hemoglobin. They are red in color because they contain hemoglobin, just red iron in it. Good. आधा अधूरा आंसर. The RBCs are red in color because it has a pigment present in it known as hemoglobin. अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, hemoglobin combines oxygen, carbon dioxide और carbon monoxide. So hemoglobin is made up of, heme is iron and globin is protein. So what is hemoglobin? A combination of iron and protein. So the blood is not red in color because of hemoglobin, but the blood is red in color because of it has a pigment known as hemoglobin, which is made up of iron, which combines with oxygen to
form the reddish color. Iron अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या होता है? रस. So what do you mean by this? Is simple language में तुम्हारा खून खून नहीं है but rusted compound. Technically right है कि your blood is nothing but red in color because of rusting of iron. But practically speaking, not perfectly placed. Your blood is not rusted, your brain is rusted. Okay? जिसको हर 6 महीने के बाद ऑयलिंग एंड सर्विसिंग करना पड़ता है बड़े प्यार से. कभी टीचर करती है तो कभी मम्मी डैडी करते हैं, पर जरूरी होता है वरना चलेगा नहीं कि जितना भी दिया है भगवान ने. So that's the part. So iron get rusted and that is why your blood is red in color. Anybody, what is the amount of RBC present in your 1 ml of the 1 cubic millimeter? Normal count of RBC? The normal RBC count in human being is 4 to 5 million per cubic millimeter. 4 to 0.4 to 4.55 million per cubic millimeter. मतलब एक डॉट से भी कम ड्रॉप में इतना सेल्स होते हैं. Okay? Next is WBCs. Okay. RBC का शेप क्या होता है? Biconcave. I hope biconcave पता होगा. नहीं, मुझे पता है फिजिक्स में आता है. What is the shape? Biconcave. कैसे लिखते हैं biconcave? अरे शेप आपने मुझे कैसे लिखते हैं? शेप डोनट लाइक डोनट विदाउट द होल. भाई मेरा पढ़ाई लिखा हो गया है कि तेरे बारे में हमको डाउट है पर तुम्हारे सब चीजों में डाउट है मुझको. इंग्लिश से लेके सभी चीजों के ऊपर. सर आपने पूछा कैसे लिखते हैं? तू अकेला छोड़ के बाकी सबको सुनाई प्रॉपरली दिया मतलब डिफेक्टिव ईयर. यू नीड टू गो टू कारगर में है नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कारगर में है ही. यू कैन डेफिनेटली गो ओवर देयर. नाउ देन biconcave is what we say as donut or what we say as मेंदू वड़ा है ना, वैसे उसको biconcave बोलते हैं. हाँ, without the hole. Then comes the next one is WBC, also known as leukocyte. Shape irregular. क्या बोला इसने? पॉम-पॉम. सर्कुलेशन में ये बोल रहा है, रिप्रोडक्शन में तो क्या क्या बोलेगा पता नहीं है. तो 6 के वीडियो में नाम मेरे को याद है. पॉम-पॉम. क्या तो मुझे लगता है पॉम-पॉम क्या शेप होता है? सेंटर वाले के पास आया था. पॉम-पॉम वो होता है जैसे मैं तुम्हारा बुक लगा होगा. मैंने पहली बार सुना है. मेरा नॉलेज बढ़ा ही है तुम्हारे बस. इसके बाद ज्यादा ही बढ़ेगा. ठीक है. गुड. स्कूल में आओ. मुझे कंफर्म करना है. तुझे कंफर्म तू लेके आना. Now, next is women. So WCs are irregular in shape. Their count is almost in thousands. RBC million में होता है, WBC thousands में होता है. Okay? No, not 7,000. It is almost 8, 9, 10,000. That is almost lower level data. Okay. Then comes is your next part is function of WBCs. Give protection. So proper word here. Fighting against foreign invaders. Another better one word answer for it. One word answer. Fighting immunity. It provides immunity. Fight against the foreign diseases, fight against the invader, whatever is what WBCs does. If WBCs are damaged, definitely you are falling ill.
The third one is platelets, also known as thrombocytes. Okay, they are nothing but broken off pieces from a large cells known as megakaryocytes. So shape wise, they are almost spindle or mouse shape basically. They are innuclear without nucleus, and most important, they are in lakhs. So 1 million में, 1 lakhs में और 1 thousands. Function of platelets: blood clotting. So blood clotting is nothing but the formation of that clot onto a injured part of your body is known as blood clotting. Then सिर्फ injured part पे blood clot होगा जरूरी नहीं है. Sometimes there could be internal clotting also. अगर internal clotting कहाँ पे बनेगा उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है how serious it. अगर बॉडी के डैमेज हुआ है उसमें बना तो ठीक है, मतलब स्टिल वर्केबल सिचुएशन. पर अगर वो इधर बना तो चांसेस मोर है. हार्ट में ब्लड वेसल्स में क्लॉट हुआ तभी भी चांसेस उसके से थोड़ा बेटर है. ओके, पर इधर हुआ तो डेफिनेटली इट्स नहीं ट्यूमर नहीं क्लॉट, ब्लड क्लॉट. ट्यूमर कैन बी अ पार्ट बट क्लॉट सर्कुलेट करने के वजह से परमानेंट करता है. ओके, और दूसरा एक होता है क्लॉट लंग्स में बनना. ओके, वो आप हायर लेवल पे बढ़ोगे, वो अगर हुआ तो बहुत ज्यादा सीरियस होता है. इतना सीरियस का विद इन अ सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट कंफर्म कि ये भी हो सकता है. That's all about your platelets. Am I clear? So we go ahead, blood done. So we go with the next part. What is the next part? Blood vessels. Okay. चल यहाँ पे सबसे सिंपल है because यहाँ पे there are 3 types of blood vessels. Arteries, capillaries, veins. Arteries, Capillaries. veins and capillaries. The connection between arteries and veins are known as capillaries, arteries and veins. चलन normally capillaries पे कुछ पूछा नहीं जाता, तो जो पूछा जाता है वो है arteries और veins पे. CBSE में एक क्वेश्चन जो होता है वो है use the difference between arteries and veins. So what are the difference between arteries and veins? सबसे पहले artery or vein and the interconnecting part between them is known as capillaries. Now first question is how do I define an artery? Now how do I define a vein? Vein is thin, thick wall, thin wall. Oxygenated, deoxygenated. मैं आंसर अधूरा क्यों आया? Little louder. Good. Arteries by definition are those blood vessels which carries blood away from the heart. Heart से दूर जा रहा है तो वो artery. The blood vessel which carries blood towards the heart is known as vein. ये definition हुआ. पुराना definition जो अब इराडी मतलब now it is discarded, अभी भी लिखते हैं but not a proper one, is arteries are those blood vessels which carry oxygenated blood except pulmonary artery. Exception नहीं लिखा तो अंडा मिलेगा. Okay, veins are those blood vessels which carry blood deoxygenated blood of veins are those which carries deoxygenated blood except pulmonary vein. Okay, children, we need to understand the difference between arteries and veins. The difference में पहला point क्या हुआ? Definition. Arteries are the one which carries blood away from the heart. Veins are the one which carries blood toward the heart. पहला difference हुआ. दूसरा, arteries carries oxygenated blood except pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood except pulmonary. 2 point हुए. सोचो. सर वो कुछ होता है, valves होता है. Semilunar valves होते हैं ऐसे कुछ. नहीं, मतलब heart. तीसरा point सोचो. Good. Arteries are thick walled. Veins are thin walled. तीसरा, चौथा, उसी से related. अगर thick walled है तो क्यों है?
Because High pressure. high pressure and it's going The blood flows at a high pressure in arteries, whereas the blood flows at a low pressure in veins. and चौथा हुआ, अब थिक वॉल्ड है, हाई प्रेशर है, उससे रिलेटेड पांचवा पॉइंट. like that was like both the ways of one place. नो, ऐसा नहीं है. Something else. What about the position of arteries and veins? Arteries are deep seated, whereas veins are superficial. ऐसा क्यों? That is more important. Arteries are deep seated. Deep seated मतलब अंदर. Okay. Exceptions are there. Okay. Exception पहला radial artery. पल्स जो चेक किया जाता है वो रेडियल आर्टरी होती है. ओके, इट्स एन एक्सेप्शन. उसके अलावा देयर इज वन इन द थाई, देयर इज वन इन द ग्रोइन, देयर इज वन बिहाइंड द ईयर, देयर इज वन ओवर हियर. ये सब एक्सेप्शनल आर्टरीज है, बट मेजॉरिटी ऑफ द आर्टरीज आर डीप सीटेड एंड वेन्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर सुपरफिशियल. द रीजन इज सिंपल. आर्टरीज में व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज फ्लोइंग? एक्सेप्शन छोड़ दो, ब्लड ऑक्सीजनेटेड. What is the pressure of the blood? High pressure. अब इमेजिन करना, बुले भटके से घर पे काम कर रही है, मम्मी को हेल्प कर रही है, वेजिटेबल चॉपिंग करते हो, चॉपिंग करते 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 हाथ पे कट हुआ, just a small cut. Okay, so if there's a small cut और मान लो arteries are superficial, so blood कैसे निकलेगा? फाउंटेन की तरह, बिकॉज हाई प्रेशर. कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड. इमेजिन फॉर बॉयज, कट हुआ, फाउंटेन की तरह निकला, ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऊपर से दैट ब्लड वाज सपोज्ड टू गो टू द ब्रेन, वही ब्लड बाहर निकला. तो पहला कोमा फिर फुल स्टॉप. Okay, पहला कोमा में जाओगे फिर फुल स्टॉप पे जाओगे. So that children cannot afford. So God is a wonderful creator again. Okay, technically deep seated, ताकि छोटा मोटा कट हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या, लो प्रेशर में थोड़ा थोड़ा काट आएगा. So वे कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड. मरोगे नहीं. So it's a ideal way, but conditions applied. एक नमूने होते ना, उसने हाँ बोला ना बोला, है ना? So then that nonsense stuff goes on. The cutting of this part, any cut onto radial artery can immediately lead to death because blood flows at a very high pressure. Loss is too high and you will die. Another, अपन किसी एनिमल को मारते हैं, स्पेसिफिकली चिकन विकन, बाहर जल्दी निकलता है बिकॉज कैरोटिड आर्टरी. पिक्चर में दिखाते हैं ऐसा, हिंदी मूवी में, फिर उन्हें काटा सब खून निकलता है बाहर. ये वो एनिमल है नो डाउट, बट स्टिल दिस कैरोटिड आर्टरी अगर कट हुआ तो सब फाउंटेन की तरह ही ब्लड आएगा. सो दैट्स द हाई प्रेशर. तो 5 हुए. छठा, के आर्टरीज डू नॉट हैव valves, veins have valves. Now, what is the importance of valves? Heart में valves होते हैं, पर veins में भी होते हैं. Reason is To prevent backward flow of blood. to prevent the black flow of blood in veins. चल, blood artery में कौन से pressure से जा रहा है? So when the water is flowing at a tremendous pressure, उस पे अगर आप दीवार बांधने की कोशिश करो, कुछ रहने वाला है, वो उसको ब्रेक करके ही निकलेगा आगे. So if you try to put a valve in the arteries, will it remain over there? वो backflow का चांस ही नहीं है वहां पे, उसको तोड़ के चला जाएगा. But what is happening when the blood is coming in the vein? Already the pressure is low, and where does the vein takes the blood? Majority of time it takes from down to up, against the gravity. So उस टाइम पे क्या है? Gravity के against जा रहा है, always a chance to go back. So in order to prevent the backflow of blood, valves are
treasure. Valve's only function is unidirectional flow of blood. तो वो नीचे की तरफ ओपन रहते हैं, ऊपर की तरफ क्लोज, ऊपर की तरफ ओपन होंगे और नीचे की तरफ क्लोज, ताकि ब्लड रिटर्न ना जाए. अगर ब्लड रिटर्न गया तो क्या बोलते हैं उसको? अगर वेन्स में वाल्व्स डैमेज हुए तो देयर इज अ टेक्निकल टर्म फॉर इट. Heard about varicose veins? Yes, it's basically joints के यहाँ पे ज़्यादातर नहीं calf के यहाँ पे. Good. It is mostly on the calves and all these things. Under which category of disease it comes? Any idea? Okay. Then varicose veins is a disease comes under the heading occupational hazards, occupational disease. And also then people who are working in say air. भाई उन लोग हवा वालों को सिर्फ होता है क्या? ऐसा किसने कहा? So then they can get Good. very. इसने बोला. The people who are maximally affected with disease are those who are standing job. Maximum standing जिनका होता है उनको ज्यादा अफेक्ट करता है. Okay? No doubt. अगर एक जगह पे पोजीशन बैठे हो तो भी होता है, पर मेजरली स्टैंडिंग जॉब. सो स्टैंडिंग जॉब में जो लिस्ट होती है हाईएस्ट कैटेगरी, इसमें सबसे पहले आते हैं ना, अपन सबसे लिस्ट स्टार्ट करते जाए कि सबसे पहले आते हैं डॉक्टर्स और नर्सेस जो खड़े रहते हैं ना, बहुत टाइम खड़ा रहना पड़ता है. उसके बाद आते हैं मिलिट्री, पुलिसमैन, पैरामेडिकल एंड ऑल दिस थिंग्स, वो भी तो खड़े रहते जॉब में 24 आवर्स में खड़ा रहना पड़ता है. सो सेकंड. फिर आते हैं एयर होस्टेस वगैरह, वो भी आते हैं उस कैटेगरी में. ओके. और सबसे लास्ट जो आते हैं जो खड़े रहते हैं वो है बेकार टीचर्स. क्या टीचर्स अच्छे होते हैं? क्या बात है. अब पता नहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा. इतना बोलने से हार्ट अटैक आ ही जाएगा मुझको. होमवर्क नहीं करके आई. सर होमवर्क दिया था. आपने होमवर्क दिया ही कहाँ? चुप रहे. तो बोला अभी तू मुझे बोलेगा, वरना तुझे मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा आज के लिए. What was the homework given? रिवाइज करके आना, आपका मन करेगा तो सुनोगे. गाना गा रहे हैं, स्लो गा रहे हैं, स्लो गा रहे हैं. क्या? सुनोगे सुनोगे नहीं. अगर मैं कहा रहता फ्लैट नंबर ही बता दे. एक ही बिल्डिंग में गुड, इसीलिए ऐसे ही दोनों है. बिल्डिंग का इशू है. इसका कान सच्ची का प्रॉब्लम है तेरा. नहीं था होमवर्क, तो याद है. आपने बोला तो रिवाइज. सब ये बोला मुझे पढ़ा था. आप तो सिखा रहे हो. वही तो बोला मैंने. अब मैं क्या करूंगा ये सुन लेना. पहला सुन तो ले. अब तक मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं है ना, बिकॉज स्कूल से आते हो थके हमारे मरे है ना. हाँ क्या हेक्टिक लाइफ. हाँ सर, प्राइम मिनिस्टर के बाद हमारा ही नंबर आता है. वी आर वेरी हैविंग हेक्टिक लाइफ. सो उसके पास कम से कम थोड़ा टाइम होगा, हमारे पास वो भी नहीं है ना. वही पर वो तुम्हारा थोड़ा टाइम है ना, मैं तुम्हें वैकेशन में बताऊंगा व्हाट इज दैट थोड़ा टाइम. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर वैकेशन पार्ट. बिकॉज़ तब तुम्हारा होमवर्क क्या होता है, क्या सुनूंगा, क्या सुनवाऊंगा और कितने देर तक बिठाऊंगा, ये सब उस टाइम पे समझ में आएगा. ओके, by default 6 hours and I'll see you with 9 hours. Okay, and I do it. And your parents would be happy to make you sit by 9 hours. डब्बा भेजेंगे सर, नाउ क्या 12 घंटा बेटा, वी वुड बी हैप्पी टू हैव दैट. वही अच्छा, वो खुश हो जाएंगे, उनको थोड़ा शांति मिलेगी. और तुम जैसी बच्ची होगी तो शायद सच्ची शांति मिलेगी. ये वाली है. तो आपने होमवर्क थोड़ी किया था, मैं सही तो था. मैंने पहले लेक्चर में कहा था, माय डिफॉल्ट होमवर्क इज रीड एंड कम. आई कैन आस्क यू एनी काइंड क्वेश्चन,
और मैं सुनूंगा नहीं, okay? ये गाना नहीं सुना के दे रहा है. So when I ask questions, don't worry. एक हफ्ता सिर्फ पेशेंस रखना. उसके बाद होमवर्क क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉट डूइंग द होमवर्क, मैं आप सबको पिक्चर ट्रेलर सब दिखा दूंगा. ओके, एंड दैट टाइम यू रियलाइज क्या RSM को चल्ला रावण ऐसे क्यों बोल नहीं सुनाएगा. अच्छी बात. Next. So now the last point was क्या arteries and veins में valves present, valves absent. So that prevent the backflow. It's varicose veins, occupational hazard. सबसे लास्ट में जो आते हैं वो टीचर्स, सबसे टॉप कैटेगरी में जो आते हैं वो टीचर्स हैं. ओके, रीजन सिंपल है चिल्ड्रन, डॉक्टर और नर्सेस पे ये बहुत कम अफेक्ट करता है. भले उनका स्टैंडिंग है बट दे नो दिस कंडीशन सो दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. पुलिस वाले अनपढ़ होते हैं देखा जाए तो मतलब मेडिकल के आर्ट में, पर स्टिल दे आर नॉट अफेक्टेड सो मच बिकॉज मिलिट्री पुलिस वगैरह बाय डिफॉल्ट उनको ये पता नहीं होता है. और उनका जो कॉस्ट्यूम होता है स्पेसिफिकली ड्रेस जो होता है उनमें स्टॉकिंग्स कंपल्सरी होते हैं and the stockings protects them from this part. Okay, if you wear a thick stockings onto the elbow, onto the calf region, you are being protected. So वहां से वो निकल गए. Same goes for air hostess also. उनमें भी stockings वगैरह है तो वो भी बच जाते हैं. अब बचे बेचारे अनपढ़ बेकार से टीचर्स. Why I'm saying अनपढ़ और बेकार because it's a fact. If you go and take a survey of your school itself, ये उनको पूछना टीचर्स को, मैम वेरिकोस वेन पता है, तो देयर वुड बी सम टीचर्स जिनको पता होगा शायद प्रॉपर्ली नहीं, और वो जिनको पता होगा प्रॉपर्ली देयर वुड बी डेफिनेटली अ साइंस टीचर, उसमें से भी बायोलॉजी. ओके, तो बाकी बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश को कुछ भी नहीं पता होगा शायद से, या होगा थोड़ा. ओके, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद इट. सो पता ही नहीं तो काय का टेंशन, जब पता चलता है तो बहुत कुछ हो जाता होता है. So that's another problem with it. So was present and was absent. Am I clear? So that's some of the differences between arteries and veins. That was the diagram of artery and vein. So यहाँ पे चलन difference देखना. Carries blood away from the heart, carries blood towards the heart, carries oxygenated blood except pulmonary artery, carries deoxygenated blood except pulmonary vein. Thick wall, thin wall, wall absent, wall present, blood pressure high pressure, blood pressure low pressure, deep seated, superficial. Last point. Narrow lumen, broader lumen. Now what is narrow lumen, broader lumen? ये आर्टरी का डायग्राम है, ये वेन का डायग्राम है और ये कैपिलरी का डायग्राम. डायग्राम आपको है नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ. Then arteries are made up of 3 layers, veins are also made up of 3 layers, capillaries में सिर्फ एक लेयर होता है. तो आर्टरी में जो मिडल लेयर होता है, जो मस्कुलर लेयर होता है, वो बहुत मोटा होता है. उसके वजह से इनर सर्कमफ्रेंस, मतलब इनर डायमीटर क्या हुआ, छोटा हुआ. So the inner space of any cylindrical cylinder is known as lumen. ये कम हो गया. वेन में जो मिडल लेयर है मस्कुलर, वो बहुत पतला होता है. That is why the lumen is wider. So broader lumen, narrow lumen. कैपिलरी में जो आउटर 2 लेयर आर्टरीज और वेन्स में वो होते ही नहीं, तो उसमें सिर्फ थर्ड लेयर इनर मोस्ट लेयर होता है. Oh, third layer is nothing but the 9 standard simple epithelial cells. Okay, cuboidal epithelial cells. Okay, stratified cuboidal epithelial cells. तो उसमें ये stratified नहीं है, simple epithelial cells है. That is columnar नहीं होता है, cuboidal epithelial cells. Clear with this part? Next. The next important organ, blood vessels of blood उतना ही था, तो अभी important जो पढ़ना है वो है the pumping organ, heart. Okay, where is your heart situated? In the middle but tilted towards the left. Okay, the heart is never situated in the left side. छोटे बच्चे को पूछा ऐसा दिखाएंगे left side. अपन national anthem कुछ भी गाते हो. Okay, that's how we had been taught to us in the lower classes. से बच्चा इधर एकदम बचपन तो ऐसा इधर इधर भी लग देता है, फिर इधर 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 बड़ा बड़ा होगा तो इधर, और फिर आपको समझ में आता है इधर तो इधर. Okay, so that's where the heart is. So heart is present in the center
of the thoracic cavity. Thoracic center में exactly behind the sternum bone. यहाँ पे dagger like bone है, you can touch over here. That dagger like bone is known as sternum bone or also known as the breastbone. So breastbone or sternum bone is exactly behind this, is present your heart. The apex of the heart tilted towards the left side. So ऐसे heart है. So heart is not like this, but slightly on sideways of the left. Because the left side, the apex, जहाँ पे ventricles होते हैं, these are the ventricles part. So more is on the left side, जहाँ पे ज़्यादा pumping होती है. इसके लिए अपने को लगता है heart left side पे, heart center में, but apex left side पे. दुनिया में 8 लोग हैं जिनका heart right side में, and they are alive. There is no problem in it. So it is just an abnormality on the direction part. There are some persons, अभी एक शायद WhatsApp पे आपने देखा होगा बिल्कुल अपलोड होता है, हार्ट सुपरफिशियल जस्ट स्किन के नीचे सेंटर में, okay, so वो भी जिंदा रह रहा है. So that's an exception which is there. उसके अलावा there are sometimes deformity जहाँ पे हार्ट outside the body रहता है, okay, that's diastole, but that is not safe over there, so वो मरना ही है. But that is how heart is. Then ये सब abnormalities है. In general, we say always the heart on the left side. Am I clear? Yes. Okay. Now, the heart is externally covered by a very tough connective tissue known as pericardium. Peri, surrounding, cardium, cardiac, या heart. So pericardium. So if I take my, by the way, what is the size of the heart and what is the weight of the heart? What is size of the heart? Okay, so exam में आप लोग गए. So what is the size of the heart? क्या कौन से पार्टी का हाथ दिखाओगे? ना क्या सुपरमैन? शक्तिमान, sorry, शक्तिमान. ड्रॉ करोगे क्या लिखोगे? The size of the heart is one's own clenched fist. One's own, because I cannot have a small baby and sir heart की size. Okay, उसका fist मेरा size का नहीं आएगा ना heart. So obviously my own clenched fist is my heart size. So one's own clenched fist is the size of the heart. उनका छोटा या इसकी बड़ा. पैदा होगा ना उतना क्या उतना इतना था, उसमें ब्रेन घुसा होगा जब बड़ी हुई थी तभी ब्रेन इतना सही है. एक्सेप्शन तो ऑलवेज देयर. और किसी ने सर्च ही क्या है, यूजलेस. अब दोनों एस्पेक्ट में समझना, यूजलेस और यूजलेस. Okay, that fits properly for everyone. Two exception नहीं है ना उस कैटेगरी में. You could be exception enough. Yeah, there are always exceptions. होगा कि ये भी डाउट है. क्लास में 2 जन कंफर्म है जिनके पास. That's the hard part. So it is a clenched fist, weighs somewhere about 300 to 500 grams. 1 kg, 500 भी जाता होगा, 300 to 350, 400 तक जाता है. Imagine 1 kg heart kept over here. So it's a minimum weight. Then covered by a membrane known as pericardium, a thick tough membrane known as pericardium. Pericardium, अगर heart ये है, उसके बाहर पूरा pericardium है, surrounding it. Between the pericardium and the heart walls, there is a space known as pericardial space. Membrane, pericardium, space,
pericardial space. This space is not empty. ऐसा जगह खाली नहीं है. Within that there is a fluid known as pericardial fluid. मेरा चेक बाद में कर लिया, राइट पढ़ा रहा और रॉन्ग पढ़ा रहा नहीं, बोल दो. बार बार देख के चेक कर रहा है कि सर राइट पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है. So pericardial fluid. Now what is the function of this pericardial fluid? What is the function of pericardium? Good. It protects the heart. It somewhat maintains the shape of the heart. Pericardial fluid. सबसे important function करता है ये. What is the function of the heart? So अगर सोचो pericardium, heart, और हार्ट पंप कर रहा है, क्या हो रहा है? There is a friction created between the pericardium and the walls of the heart. Friction की वजह से क्या होगा? Heat. उसके वजह से क्या होगा? Good. हार्ट बर्न, या सिंपल लैंग्वेज में दिल जले. या तुम किस सेंस में लो तो मुझे नहीं पता, बट अपना भुना हुआ हार्ट ना, भुना हुआ चिकन वैसा भुना हुआ हार्ट जाएगा, या दिल जले या हार्ट बर्न, then slowly and progressively the heart will burn out and obviously you will be affected. So again it shows God is a wonderful creator. Heart एक lubricant रखा हुआ है known as pericardium. So it acts as a lubricant. It acts as a shock absorber. Fluid भी और pericardium. So when you are at home, कि अगर घर पे छोटा भाई बहन कजिन्स वगैरह होंगे तो डेफिनेटली देयर इज सम और द अदर टाइम WWF होते रहता है कि मम्मी तेनी मला चोरात मारला, मम्मी तेनी चोरात मारला. So then it's like दूर के रख के दिया. So when somebody hits you onto the chest region, the heart doesn't go ting tong like this. That jerk is taken up by the chest muscles, rib cage, and majorly taken by pericardium and pericardial fluid, ताकि heart कभी भी safe रहे. So that's जिंदा नहीं, जिंदा हो गई, but then that's the safe part. That is what pericardial and pericardium does. Am I clear? Yes, sir. Then so outer part समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं outer envelope. अब अपन हार्ट का ये बाहर निकाला, पेरिकार्डियम फ्लूइड बाजू हट गया. अब हैप्पी बर्थडे टू द हार्ट कट करना. So we need to cut open the heart. So when you cut open the heart, how many chambers in the heart? What are the 4 chambers? थोड़ा ढंग से पूछता हूँ. What are the upper chamber and what are the lower chamber ones? Upper are referred as atrium or auricles. The lower are referred as ventricles. Now, this auricles or ventricle are further divided into 2 parts. Left and right. So left auricle, right auricle. Left ventricle, right ventricle. इसके आगे बाद में करेंगे. वैकेशन में मत पढ़ के आना, मतलब उनका क्या करना है.